चैनल दिस इज सृष्टि एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे हो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइस। सो आज की इस वीडियो में भी मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स के जो हैंड्स हैं उनका एनालिसिस करूंगी, प्लस आज एक और वीडियो को डालने की पूरी कोशिश करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी लकी साइंस। ठीक है, कुछ एक या दो साइन अगर आपको हाथ में अगर वैसे मिल जाते हैं दैट मीन्स योर लाइफ विल बी फ्लोरेस। ठीक है, बहुत अच्छी फ्लुएंट होगी आपकी लाइफ एंड बहुत ही अच्छी आपकी लाइफ जो आगे चल के स्मूथ बनेगी। अगर आपके हाथ में वो साइंस नहीं है तो आपको निराश होने की भी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिससे वो साइंस ऑटोमेटिकली आपके हाथों में डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं अपने सब्सक्राइबर्स का हैंड एनालिसिस करूँगी एंड दिस गाय वांटिंग मी टू स्पीक इन इंग्लिश, सो दिस होल analysis will be in English. Okay, so let's dive into it. Okay, so firstly, I don't know the name of this subscriber. However, his Insta ID, when I saw his Insta ID, the name was like United Views. So this is for your so now your term has come. I'm going to analyze your hand. Okay, all right, so the main and the first question of this guy was the abroad settlement and then the marriage. Okay, so for the marriage I would say, since I do not have the clear hand picture of yours and your fingers, I can't see it properly, right? So it would be hard for me to analyze like everything in detail, but I can give you a clue, right? Okay, firstly, let me okay, now it's all good. Okay, so firstly I will let you know about your marriage thing. Okay, for your marriage what I can see is it could be late, a little late. Okay, not very late, I would say. It could be around 30 to 35 years, in between that time frame. Okay, because we always check this hand. Okay, so for the marriage I always tell you guys that we only rely like 50% on our hands lines, on our palmistry, and the 50% on our kundali. Okay, so the kundali can be built by any if you go into the temple and can ask any saint, they can prepare a kundali for you. Okay, and yeah, so I will erase this thing, but what I can see from your hand, it should be around 30 to 35. Okay, in between that time frame you will get married. Okay, and do not worry about it. That would be a successful one. Okay, you will that would be a successful, plus you will be going to have a love marriage, so do not worry about it at all. Okay, and for your abroad settlement, okay, so there is an abroad settlement for sure. It could be a little late. A little means it could be after next couple of years you could settle down abroad, but once you gone abroad you will be always live and settle over there. Okay, you won't be coming back to into your home country. You would be means for the tourist purposes, or if you want to roam around or wander around, you would be visiting your home country, but not for living an entire life over in your home country. Okay, you won't be living your entire life over there, so you would be live and settle in abroad, because there are so many signs, so many numerous signs that I can see on your palm which indicates a foreign settlement in your hand. Okay, and also guys, I just want to bring one thing in notice. So if you're sending me your palm pictures, you gotta wait for like a couple of weeks, because I've already got bunch of pictures, so I have to analyze the previous subscribers hand, and afterwards I will be dealing with your hands. Okay, so you gotta wait for like around 1 or 2 weeks, I would say, but it could be more longer, because since I'm getting like approximately 10 pictures on a daily basis, not 10, sometimes 10, and sometimes it is like 5 or 6. Okay, so it is actually very, it's quite difficult for me, and I would say it is actually very tough for me to analyze each and every person's hand, so I have to take the random pictures of every hand. So yeah, and this way I would be able to analyze, but expect there will be a delay for like couple of weeks, but your turn will come for sure, that I can guarantee you. Okay, so your turn will come,
I'm 100% sure about this, but it could be a little late. For example, if I'm talking about this guy has sent me picture a month ago, and I'm not kidding, right? So this guy has sent me his palm picture for like a month ago, and now his time has come that I'm going to analyze his hand in detail. Okay, so please expect there is a little delay, but for sure I will be going to analyze your hand. That is 100% surety. Okay. And also there are so many people who are actually asking for the price of kundali. So in Canadian dollars it should be like $20 for the kundali. If you want me to check your kundali, it is like $20. Just give me a second. Yeah, it will be $20. Okay, and it is already negotiable because kundali requires a plentiful amount of time to study and read and then to analyze it carefully. Okay, so it is all the matter of planets. We have to analyze everything and then we have to tell you the remedies according to that thing, so it's gonna take time. So that's the reason I'm telling you. And there is no necessary for you to share your kundali. Because why? Because usually we use kundali when it comes to your married life, your relationship, your compatibility towards the another partner. Okay, or either if you're facing a lot of ups and downs in your life and your life is not stable. Okay, and if you're not and if you're planning to go abroad, and in case you are not in case you are facing lots of obstacles and hurdles that make your travel like really tough. So in these cases, there are very rare cases we are actually seeing the kundali. Otherwise you can get to know each and everything about from your hand itself. Okay, for example, in this case I can see that this person may be facing an ups and downs, a lot of curves in his life because of his fate bhagya rekha, fate luck line. I should be using English at all the times, I always forget that. Okay, give me a sec. Okay, so if I draw, if you can see, if I zoom in a little, you could see that his fate line is a little fade, right? It is a little fade. So what it indicates, actually a fade line. Okay, line, a fade line which is not clearly visible in your hands indicates a level of stress. Okay, that really doesn't mean that you won't be facing any good things in your life. You would be, but there will be a delay in each and everything which you will be doing. For example, if you want to become an engineer or doctor, whatever profession you want to become, it will be taking around plentiful amount of time and years. Okay, so ready for that struggle and ready for that hard work. There are some remedies that I will be going to let you know, but after doing that remedies you can make your life so much flourished. Okay, okay, I will erase this thing. So there are so many indications for you to go to abroad. Okay, and once you go over there you will settle forever. And the second thing is, if you are in the home country right now, you must be struggling a lot, because what your hand tell me that you won't be able to earn a lot of money while sitting in your home country, because these kind of people, the sign which I will be going to tell you, like this, the first thing. Okay, and your fate line is coming over to the moon. This is a second sign. Okay, and the third sign I would say this line. Okay, so if you have like these three things in your hand, these three lines in your hand, that means that you will be going to earn money away from your home country, away from your land where you have been raised. Okay, if you are in your home country, even though you have these lines, it would be very difficult for you to survive in your home country with nice pay or with nice salary. Okay, so that gonna bring a struggle in your life. So you have to try a lot. You can go on to a study purposes, on the tourist purposes, or either you can go via your job as well. Okay, the third thing which I have seen in his hand is his sun line, and it is fade as well. So whichever line is fade, okay, so it won't give you so it won't give you the fruitful results. In order to make it robust, in my previous videos also I have tell you like so many remedies in order to improve your sun mount. Go and watch out those videos and start implementing those remedies on yourself. Once you start implementing on that, I would guarantee for sure probably in next 6 months you will be in the abroad country. Okay.
So your sun line is fade. On the top of that, I can see that your sun mount is not bulging out at all. So that's the reason there are obstacles and hurdles in your life is coming. Okay, so and this is the only reason that the person face ups and downs and lot of curves in their life. Okay, just give me a second. Also, apart from this, what I believe, this person is very 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 hardworking. Okay, this person is very hardworking, and it is like that the amount of hard work he's giving right now at his workplace or in his life is actually not getting being is not being appreciated at all. Okay, and whenever if that thing happens to you, that the only reason it happens to you because of your sun mount. Sun mount is the amount of appreciation. Sun mount is the amount of recognition. Okay, sun mount is the amount of your height, achievements and everything. So the most prominent mount I would give the so the most prominent mount in our palm is the sun mount. The second I would say is our Brahspat mount, this mount. Okay, Jupiter mount I would say. Sorry, why am I'm sorry, I completely forget that I need not to use the Hindi language right now because of my some certain subscribers, they cannot understand that, so I'm really sorry for that. Since I'm so much used to actually speaking in my language, so that's the reason I'm keep on using certain words in my language as well. So I'm really sorry about that. So your this Jupiter mount, I would say it is very very prominent. It shows like that you will be going to have a love marriage, and your love marriage will be very very successful. Okay, and after, and also this is the indication of one more thing I forgot to tell you guys. So if your fate line is coming like this on the it's actually touching to your moon mount. If your fate line is touching onto your moon mount, that means that after your marriage your life will change drastically in terms of good things. Okay, you would be getting a lot of money, you will be getting a lot of support, you will be getting a lot of appreciation from your partner. Okay, so and also your we can say your destiny will wake up after your marriage. Okay, once you get married. Apart from this, okay, one more thing which I have noticed here is this thing, breakdown of breaking mind line, or you could say the breaking lines in your this thing. Okay, if you have a breaking mind line like this, it is not good. It is actually very 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 unfortunate thing. Unfortunate in terms of you might face a certain kind of head injury in your life. Okay, there is a mantra, the powerful mantra, I would say. This mantra, if you are facing any kind of disastrous disease, if you are into the disease or stuff like that, if you start chanting that mantra, your life will change. Okay, and I would let you know at the end of this video what is that mantra. Okay, so this relates to an head injury. If your lines are break down, for example, if your fate line is like that, it is also not good. If your mind line is like that, it is also not good. If your lifeline is also breaking, that means if there is any break in between your lifeline, that means shortage of your life. Not a shortage of your life, it means that you probably can meet an accident. Okay, you probably met with an accident, and that would be a horrible one or terrified one. Okay, so you need to care or take care of these things. For example, I can see these things in his hand, so I would ask him to chant that mantra, and that mantra will improve his will help you a lot in your life. Okay, that is a Mahamrityunjay mantra. Okay, if you type that into YouTube, the Mahamrityunjay mantra, okay, you will get to know what that mantra look like. Okay, and then you have to chant it like almost 1 hour, almost 1 hour in the morning, almost 1 hour in the evening. Okay, and you have to do that on a daily basis because this seems to be an head injury.
that means you can probably in your future can meet an accident, and that accident would be a terrified could be a terrified one. So okay, I'm not making you terrifying, I'm not terrifying you at all right now, I'm not making you scared at all. It's just that I'm making you aware about the future things that will be going to happen in your life. Okay, you can eradicate those things which I'm telling you right now, okay, by implementing those remedies which I'm telling you right now. So you can eradicate all these things, okay. It is totally in your hands. So that's the reason I tell you that 50% we rely on kundali and 50% on palmistry, because our palmistry tells us a lot about our future, okay. Okay, so the first and the foremost thing which you need to work upon this mantra, okay. So start doing that from today itself, right away, okay. Start doing, dedicate 1 hour in the morning, dedicate 1 hour in the evening, and you will see the changes coming into your life, okay. I'm not saying, okay, and also by using this mantra, all unfortunate things happens to your life, they won't be going to happen, okay. You can mitigate all the unfortunate things in your life by chanting that mantra. That mantra is a very holy mantra, okay. Apart from this, now I can see there is a supporting line, okay. The main thing I want to tell you in my next video as well, if you have a supporting line which is going to support your lifeline, that means if you are on the, for example, if you met an accident, I'm just giving you an example, that doesn't really mean that you will be going to have an accident in your life, okay. So if in case, I won't say like that, if you met with an accident, okay, and I'm not telling to this guy, I'm telling to everyone, then this line gonna support your lifeline, and this line we call as a fortunate line. Not everyone is having these kinds of line, which is actually a very very fortunate, okay. Kind of these kind of lines in your hand which is actually supporting your lifeline. For example, if you having any severe disease in your life, okay, but that disease won't harm you until and unless you are having these lines in your hand. So these are the auspicious and the fortunate lines. It cannot be found in everyone's hand. It is very rare that you would be able to find these supporting lines in your, just besides your lifeline, okay. And if you have these lines, that means whatever happens to your life, this will give you another life. These lines will give you another life, okay. So these are the supporting lines for your lifeline. So having these lines is very fortunate thing, okay. And you, apart from this, I can see there is a line which is actually coming out from your lifeline and moving on to your Jupiter mount, which is actually very fortunate sign as well. So this is what we call as a progress line, okay. So this is a progress line. So as soon as you will be means these lines will help you in making your life prosperous and will help you in progressing you at each and every step of your life, okay. Having these lines, this is also an auspicious sign. Having these lines in your hand will change your life and will make a difference in your life. Apart from this, what I can see, you might struggle hard for your in terms of money, okay. You might struggle hard in terms of money, so you need to preserve your money. It is a time for you to do certain savings, okay. And other than that, it looks good. All right, now let's move on to the next chant. तो अभी मैं ये दूसरा हैंड एनालिसिस कर रही हूँ, और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहती हूँ गाइस, अगर आपकी लाइफ में कोई भी ज़्यादा परेशानी आ रही है, ठीक है, तो रादर देन इधर उधर भटकने के बजाय मैं आपको बताती हूँ, छोटे से लड्डू गोपाल हैं, ठीक है, वृंदावन में भी होते हैं, वो आपको मिल जाएंगे इजीली मार्केट में, ठीक है। छोटे से लड्डू गोपाल को घर लेके आइए, आपकी जो लाइफ है आप देखोगे, नोटिस करोगे बहुत ज़्यादा हद तक, मतलब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी भर जाएगी, ठीक है। जो काम आपके रुक रुक के बन रहे थे वो बहुत ही अच्छे से आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो छोटे से लड्डू गोपाल को घर पे लाना है, और घर पे ला के सिर्फ उनकी पूजा ही नहीं करनी है, उनकी सेवा भी करनी है। उनकी सेवा कैसे करनी है, उनको सुबह दूध पिलाना है,
ठीक है। उनके लिए अगर आप कुछ मीठा बना सको तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो सुबह और शाम को उनको दूध पिलाना है, उनके सामने फ्रूट्स रखने हैं। धीरे 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 आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे, उनके वर्शिप स्टार्ट करोगे, तो आपको थोड़ा ऐसा लगने लगेगा, जब आप उनको थोड़ा टाइम में दूध पिलाओगे ना, वो दूध ऑटोमेटिकली ख़त्म होने लगेगा आपकी छोटी सी जो कटोरी से जो भी आप दूध पिलाओगे जिसमें, वो ऑटोमेटिकली फिनिश होने लग जाएगा, ठीक है। ऐसा भी होता है। प्लस मेरे साथ अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, तो मतलब मेरे घर में लड्डू गोपाल जी थे, ठीक है। तो मैं उनकी पूजा करती थी, पर सेवा नहीं करती थी इतने अच्छे से, पर मैं पूजा उनकी करती थी डेली, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठ के। तो मैंने उनकी फ़ोटो क्लिक की वैसे ही, ठीक है, देखने के लिए। तो वो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने उनकी फ़ोटोज़ पे नोटिस किया कि एक फ़ोटो में उनका जो सर है वो नीचे की तरफ है, और एक फ़ोटो में उनका जो सर है वो मेरी तरफ है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी वो फ़ोटो भी शेयर करने की आपको, बट आई एम नॉट किडिंग गाइज। अगर आप अपनी लाइफ, लक, एवरीथिंग चेंज करना चाहते हो तो उनको घर पे लाके उनकी सेवा स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, मैं आपका ये नहीं कह रही कि अगर आप किसी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है अब्रॉड में सेटल होने का, और दूसरा क्वेश्चन है इनका लाइफ, मैरिज लाइफ के बारे में, ठीक है। तो अब्रॉड में सेटल होने का क्वेश्चन जो है मैं फ्रिक्वेंटली देख रही हूँ, मेरे से ऑलमोस्ट सारे ही जो क्लाइंट्स हैं मेरे, सारे ही इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं अब्रॉड में सेटल होने के लिए, ठीक है। मैं दोबारा से एक वीडियो उस पर अपलोड करूँगी अलग से कि अब्रॉड सेटल होना है, तो उसके लिए कौन सी लाइंस जो है प्रोमिनेंट करनी इंपॉर्टेंट है, कौन सा माउंट इंपॉर्टेंट है जो आपको प्रोमिनेंटली चाहिए होता है, ठीक है। प्रोमिनेंट अगर उस माउंट को करो तो आप फॉर श्योर सेटल हो गए। सेकेंड थिंग जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी हमारी लाइन्स इंपॉर्टेंट है जो अब्रॉड सेटल, अगर वो लाइन्स आपके हाथ में नहीं है तो आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू एवर थिंक फॉर अब्रॉड, ठीक है। बिकॉज आप अपनी होम कंट्री में ही रह के बहुत अच्छे से तरक्की कर सकते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। ओके, सो फॉर द मैरिज लाइन, मैरिज लाइन से पहले मैं आपको शुरू से आपको बेसिक सारी चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं इस पे। तो ये थोड़ा सा माउंट मुझे दबा हुआ लग रहा है, ऑल तो इसमें मैं अच्छे साइंस भी देख पा रही हूँ, पर थोड़ा सा ये माउंट मुझे दबा हुआ लग रहा है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, हर थर्सडे को आपको येलो कपड़े पहनने हैं, ठीक है, येलो वस्त्र पहनने हैं। दूसरा मैं ये देख पा रही हूँ कि थोड़ा आपका ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता हमारी लाइफ में। ये दिखाता है पैसे की कमी, ठीक है। पैसे की कमी कैसे होती है, मतलब आप अपने ऊपर अपने पैसों के ऊपर, अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आपके पास पैसा आता है, और जो पैसा आता है आपके पास वो तेज़ी से आपके हाथ से चला भी जाएगा, ठीक है। तो अपने घर की वाटर वेस्टेज के बारे में आप देखिए, आप चेक कीजिए, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्लस अपनी फिंगर्स को टाइटली प्रेस करके रखिए, दिन में 2 से 3 बार, ये ऑटोमेटिकली क्लोज आने लग जाएंगे। और जब गैप आपकी फिंगर्स का ख़त्म हो जाए तो ये तब आपका जो है मनी मैनेजमेंट भी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो गैप आना इज़ नॉट अ गुड साइन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर मनी। ये गैप बहुत अशुभ माना गया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इनकी फर्स्ट फिंगर पे। फर्स्ट फिंगर जो बृहस्पति है, जो जुपिटर है, इनका शनि पर्वत की तरफ इंक्लाइंड है, दैट इज़ ओके। सो देर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन दैट। बट अगर हम इनके फिंगर्स को, ठीक है, और इनके पाल्म से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा पाल्म इनका कितना बड़ा है एज़ कम्पेयर टू इनकी फिंगर्स। तो ये सीधा सीधा किस चीज़ की निशानी दिखाता है, हमारी स्ट्रगल की, ठीक है। ये दिखाता है कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल है और उसको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए, बट स्ट्रगल से डरना नहीं चाहिए। स्ट्रगल के बाद अगर हमें मिलता है तो हमें उसमें खुश होना चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट फिंगर, दैट इज़ द शनि फिंगर। शनि फिंगर में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है, आपका शनि अच्छा है, ठीक है। तो शनि की बिल्कुल सीधी रेखाएं है और अच्छी है, तो सॉरी नॉट रेखा, उंगली, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही। और इससे मुझे ये भी पता चल रहा है कि आपका थोड़ा सोशल नेटवर्क अच्छा है, ठीक है, सोशल नेटवर्क अच्छा है, आपको गेट टुगेदर्स पसंद है, आपको लोगों का आना जाना पसंद है और लोगों में उठना बैठना पसंद है आपको, ठीक है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं सूर्य की फिंगर पे। सूर्य की फिंगर भी बहुत अच्छी है, इनकी पूरी टिप है, मतलब ऊपर से कॉनिकल है थोड़ी और अच्छी है, लंबी है, बिल्कुल ज़्यादा लंबी है एज़ कम्पेयर टू बृहस्पति की जो आपकी फिंगर है उससे ज़्यादा लंबी है फर्स्ट फिंगर से। ये दिखाता है आपका कि आप काफ़ी जो हो डाउन टू अर्थ हो, मिलनसार टाइप के इंसान हो, ठीक है।
बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, जहाँ पे भी आपकी सूर्य की हल्की सी छोटी सी रेखा है। तो ये छोटी सी रेखा या फेड रेखा होना, बात एक ही हो जाती है, वो आपको इतना फ्रूटफुल कुछ नहीं दिलवाती लाइफ में। अगर आपके हाथ में एक ही रेखा है, वो डार्क है और वो इतनी सी भी है, तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगी आपको, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारी अप्स लेके आएगी, अप्स इन द सेंस अचीवमेंट्स लेके आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। बट अगर वो फेड है या छोटी है या कटी फटी है, तो उसका होना ना होना एक ही बराबर, क्योंकि वो आपको कोई भी रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट या पॉजिटिव रिजल्ट आपको उसका नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इस केस में ये भी देखा गया है कि आप लोगों के लिए जितना कुछ भी कर लो, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के बारे में सुना, मतलब लोगों ने मुझे खुद बताया कि वो लोगों के लिए कितना भी कुछ कर लें, लोग उनकी कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो, तो आप उनके लिए जितना भी कर लो, फॉर एग्जाम्पल आप उनको मनी में सपोर्ट कर लो, इमोशनली कर लो सपोर्ट, वो आपको बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करेंगे, ठीक है। बल्कि वो ये आपको बोलेंगे कि ये आपका फ़र्ज़ ही था करने का, तो मतलब उल्टा जवाब देते हैं आपको। तो ये होता है सारा कुछ हमारा सूर्य अमाउंट की वजह से। अगर हमारा सूर्य अमाउंट कमज़ोर है, तो लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। इवन इफ़ यू आर डूइंग गुड डीड्स, then also people won't recognize you, ठीक है। So we have to work upon this plan, and that's the reason I always tell everyone, work upon your sun mount in order to achieve anything big in your life, in order to get a government job, in order to successful in your life, in order to get recognized among people, in order to get enter into the politics things. You have to improve your sun mount, okay? Without improving the sun mount, do not expect anything good in your life, to be honest. Okay, moving on to your Mercury fingers. So your Mercury finger is very, very nice, okay? So there is no problem I can see in your Mercury fingers in terms of your communication skills are very good, okay? You know how to express yourself, you know how to communicate with other people, you know how to communicate fluently with other people, okay? So there is no harm in your communications is very good. So once you start, you can also become a public speaker in future too, okay, if you work upon your skills. So once you start speaking, people would listen you, okay? They won't ignore you, okay? In terms of your marriage, I would say कि मैरिज अपनी अरेंज ही कराना, नियर अबाउट जो मैरिज है हमारी, जो हम कैसे देखते हैं ना, तो ये हमारा होता है, इसके बीच में अगर हम देखें तो ये हमारा 25 का ये हमें दिखता है, ठीक है। तो ये हमारी 25 की एज होती है। बीच वाली हमें कैसे पता चलती है, हमें ये जो पार्ट होता है ना, ये जो पार्ट होता है, इसको हाफ में डिवाइड करना चाहिए। लाइक ये पार्ट है, तो इसको हाफ में डिवाइड करो, ठीक है। तो इसको अभी ये पार्ट है, तो इसको हाफ में डिवाइड करना है। ऊपर से भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए, नीचे से भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। अगर तो ये बिल्कुल बीच में लाइन आपकी पड़ रही है, तो ये 25 है। अगर इससे ऊपर लाइन जा रही है, तो 25 से 30 के बीच में। अगर ये और इसके पास आ जाएगी, ठीक है, तो 30 अबव में शादी होती है आपकी। तो इसमें ये दिख रहा है कि 25 अबव में आपकी शादी है, बिलो 30, ठीक है। पर जो शादी होगी वो अरेंज होगी। आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू हैव योर लव मैरिज, एंड अपनी कुंडली ज़रूर दिखवा लेना पंडित जी को, ठीक है। बिकॉज व्हाट आई बिलीव यू कुड बी अ मांगलिक। आई एम नॉट श्योर, आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, ठीक है। तो हमें काफ़ी चीज़ें देख के बोलनी पड़ती है। मैं ऐसे मुँह चक्की ये भी नहीं बोल रही कि आप मांगलिक हो सकते हो। मंगल का थोड़ा मुझे लगता है इशू हो सकता है, क्योंकि जब भी हमारी ये भाग्य रेखा सॉरी, सो ये हमारी बृहस्पति की ये जो फिंगर है, ठीक है, अगर ये मंगल पर्वत पे पहुंच रही है, ये वाला जो पर्वत है हमारा, ये मंगल का होता है, ठीक है। ये वाला जो पर्वत होता है ना, ये हमारा मंगल का पर्वत होता है, और एक ये वाला पर्वत भी हमारा मंगल का होता है। तो 2 पर्वत होते हैं हमारे मंगल के। तो अगर ये वाली लाइन हर्ट लाइन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट होके ऐसे मंगल पर्वत पे पहुंच रही है, तो ये थोड़ा हमारा मंगल रिलेटेड इश्यूज दिखाता है। तो इसमें मैं रिकमेंड करती हूँ, ऑल दो आपको किसी और ने भी बोला, यू कैन हैव योर लव मैरिज, यू कैन एंजॉय योर लव मैरिज, ओके, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू गेट योर लव मैरिज, ठीक है। ये निशान होना बृहस्पति पर्वत पे, अगर ये लाइंस आपके बृहस्पति पर्वत पे, तो ये लाइंस शुभ होती हैं,
ठीक है, दीज आर ऑस्पिशियस लाइन्स। एंड ऑल्सो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपको धकेलती है। स्पिरिचुअलिटी धकेलती तो नहीं, धकेलना तो बहुत गलत वर्ड हो जाएगा यूज़ करना, मीन्स उसकी तरफ डिवोट करते। स्पिरिचुअलिटी डिवोशन की तरफ आपको डेडिकेट करनी है लाइन्स, ठीक है। ये दिखाते हैं कि आप इन फ्यूचर चल के आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, डाउन टू अर्थ हो आप, और लोगों की हेल्प करना आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये लाइन्स हमारी ये इंडिकेट करती हैं, ठीक है। तो ये स्पिरिचुअलिटी का पर्वत होता है हमारा, डिवोशन का पर्वत होता है, धर्म का पर्वत होता है हमारा, कि हम कितने धार्मिक हैं, ठीक है। प्लस आई कैन सी छोटा सा क्रॉस आपके इसमें पर्वत पे बन रहा है। अगर ये कंप्लीट हो जाएगा तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड साइन फॉर यू, ओके। एंड ऑल्सो व्हाट आई कैन सी, देयर इज़ अ यव साइन इन योर थिंग, ओके, देयर इज़ अ यव साइन। बट अब इस यव साइन में क्या दिक्कत है, अब आपको अगर मैं क्लोज करके दिखाऊं तो अब आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है इस यव साइन में। इस यव साइन का होना ना होना अब आपके लिए एक बराबर हो जाएगा संजय। क्यों? क्योंकि आपका यव साइन अगर आप ऐसे देखोगे तो ऊपर से देखोगे तो यहाँ से खुला है, ठीक है, यहाँ से खुला हुआ है बीच से, और ये उस साइड से भी मुझे खुला हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आपका यव का साइन साइडों से खुला हुआ हो, या कटा फटा हो, या कोई लाइन उसको काट रही हो, या आधा अधूरा हो, तो उसका होना ना होना एक ही बराबर होता है, ठीक है। यव साइन भी कैसा होना चाहिए हमारा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर और जुड़ा हुआ होना चाहिए। कोई भी लाइन उसको कट नहीं कर रही हो, या वो साइडों से ऐसे खुला हुआ ना हो, साइडों से खुला हुआ नहीं होना चाहिए, कोई लाइन उसको ऐसे ऐसे काट फाट नहीं रही हो, ठीक है, काट फाट नहीं रही हो, छोटी सी छोटी रेखा भी काट फाट ना आ रही हो, तो वो होता है आपका कंप्लीट यव का साइन। अगर वो है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली एज वेल। हाउएवर आपका ये अंगूठा काफ़ी अच्छी लेंथ में है, तो ये दिखाता है स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड योर सिक्स्थ सेंस, ठीक है। आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, नो मैटर व्हाट, कितने आप अप्स एंड डाउन्स अपनी लाइफ में फेस करो, बट ड्यू टू योर विल पावर यू विल ओवरकम टू ऑल योर अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गिव मी अ सेकेंड, आपने अब्रॉड का भी पूछा था, मैं अब्रॉड का भी आपको बता देती हूँ, मेरे दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया था अब्रॉड का, ओके। सो अब्रॉड आपका जाने का बन सकता है, मैं ये नहीं कह रही आप अब्रॉड नहीं जाओगे, यू विल फॉर श्योर गो अब्रॉड, बट वहाँ जाके सेटल होने के चांसेस बहुत मेयर है, बहुत मेयर इन द सेंस आई वुड से कि आप जाओगे टूरिस्ट पर्पसेस पे, एंड टूरिस्ट पर्पसेस पे फिर आप वापस भी अपने होमलैंड में आ जाओगे। इनफैक्ट आपको जो सक्सेस है आपके होमलैंड में ही मिलेगी, ठीक है, बिकॉज क्योंकि मैं ऐसा कोई साइन नहीं देख पा रही हूँ जो ये मुझे दिखाए कि आप वहाँ जाके सेटल होगे, ठीक है। इसमें ये दिखाया जाता है, मतलब आपके हाथ देख के ये पता चल रहा है मुझे, क्योंकि आप देखो आपकी भाग्य रेखा भी कितनी फेड है एंड थोड़ी सी टूटी हुई भी है, तो वो मतलब वो तो चलो टूटी हुई भाग्य रेखा तो हमें लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का ही संकेत देती है कि आपके लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट ड्यू टू योर विल पावर यू विल ओवरकम योर अप्स एंड डाउन्स। बट बाहर जाके सेटल होने का मुझे आपके हाथ में कुछ भी संकेत नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप अपनी होमलैंड में रह के मेहनत करो एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सीड, बट यू नीड टू डू सर्टेन रेमेडीज़ इन टर्म्स ऑफ द सन माउंट, ठीक है। सन माउंट को लेके आपको रेमेडीज़ करनी है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बारी बताया कि सन माउंट को आपको कैसे इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो आप प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट वीडियो फॉर श्योर, ठीक है। आप उसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करो एंड you would definitely you will definitely attain success in your life, ठीक है। एंड देन थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बोलूँगी आपको कि आप जितना अपने पेरेंट्स के क्लोज जाओगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा जो है आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते, चांसेस बढ़ नहीं जाते, आपको लाइफ में सक्सेस मिलती ही मिलती है, ठीक है।
और अपने इष्ट देव बनाइए, आपके कोई भी इष्ट देव हो उनकी सुबह और शाम आपको दिया जलाना है, उनके आगे उनकी पूजा करनी है, एंड यू वुड सी द डिफरेंस विल कम इन टू योर लाइफ. दीज आर द लिटिल चेंजेस विच will become a big change in your life, ठीक है, which will actually bring a big change in your life. So I hope you guys love this video. If you have any further questions and just let me know in the messages itself, ठीक है, मैं ट्राई करूँगी आपको बताने के सारे आपकी queries के बारे में. And okay, so I will try hard to put another video very sooner, जिसमें मैं ये बताने वाली हूँ कौन से लकी साइंस हैं, ठीक है, कौन से ऐसे लकी साइंस हैं जो आपको बहुत मतलब रेयर ही होते हैं, ऐसे हर किसी के हाथ में वो साइंस नहीं मिलेंगे. इफ़ इन केस इफ़ यू डू नॉट फाइंड दो साइंस इन योर हैंड, जो कि बहुत रेयर ही होता है, आई विल टेल यू सर्टेन रेमेडीज. इफ़ यू वुड स्टार्ट डूइंग दैट, यू वुड स्टार्ट एनालाइजिंग दैट दो साइन विल स्टार्ट डेवलपिंग इन योर हैंड्स, ठीक है. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर गाइज, बाय बाय.